इतना फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends. We welcome all of you to our Business Opportunity with Chai webinar series. This is our aim to talk about and to launch the business opportunity today through this platform. It's a 45-minute session where first we'll invite the founder of the brand, talk about his dream, talk about his vision, and what kind of the business opportunity he's offering today in the market. Then we'll move towards a panel discussion. During our panel discussion, we would love to take all your feedback, suggestion, and queries to make this session very interactive. There is a question and answer box, so requesting each one of you to share your queries in the same. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am, for this webinar. They are hosting the webinar. And the business opportunity which Franchise India team is launching today comes from the land of Ahmedabad, Vittle Box. It's a leading next generation cloud kitchen brand. Launched in 2016, Vittlebox is a leading new generation cloud kitchen business that creates delicious food experience for the consumer. Vittlebox is a dynamic model which is in a quick service space, delivery and takeaway format also. They offer multiple brands, variety of cuisine. But to talk about the business opportunity, now I invite Darshit, who is a founder and the director at the company, and why he started this particular business. He comes with a strong background. He comes with an experience in the manufacturing industry. But I will not take much of your time. I will now invite Darshit to talk about the business opportunity, his background. Welcome, sir. Welcome to the webinar. Thank you so much. Thank you, Archana ji, for welcoming me for this. Welcome, sir. We can go on. Sure. So should I, I'll share my screen. Ji. Okay. Is the screen visible? PPT, you need to, okay. Yeah, it's there on the screen. All right. First and foremost, I would like to thank you to the Franchise India team for providing me this opportunity to showcase the business that we already have in Ahmedabad. Before beginning with the presentation, I would like to introduce myself, mera jo background hai, and throughout the presentation, I will be conducting this whole presentation in 2 languages, Hindi and English, so that everybody gets comfortable with it. So about me, I am a management student. मैंने MBA Marketing and Human Resources किया है from Lubin School of Business, New York. After that, after doing my MBA, I joined my family-owned business, जो
ऑटोमोबाइल bearings मैन्युफैक्चर करते हैं. We are OEM suppliers to almost all of the major OEMs present in India, such as Tata Motors, Eicher Motors, Ashok Leyland, Daimler Chrysler. सब में हमारी bearings जाती हैं. It's a family-owned business. So coming back, like I am a Gujarati based out of Ahmedabad. This venture of mine, Vittlebox, is basically a diversification. And मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि what exactly is Vittlebox and हमारी पूरी जर्नी क्या है and हमारा like what sort of options for scalability that we are looking at and how interesting or fascinating this whole industry is. I'll totally walk you through this. If you have any questions, जैसे अभी अर्चना जी ने mention किया, आप कोई Q&A में mention कर सकते हैं, we'll get back to you on that. So moving ahead. So Vittlebox is basically a cloud kitchen, all right. And did you know that food industry is changing? Amid जैसे ये कोविड हुआ, कोविड के टाइम में बहुत सारी डाइन-इन रेस्टोरेंट्स बंद हो गई. They had to close down operations owing to limited seating, limited accessibility. But इस कोविड के टाइम पीरियड में डिलीवरीज, जो फूड ऑर्डर्स के जो डिलीवरीज थी, that remained stagnant. Degrowth हुआ but कम नहीं हुआ. Right, so approximately 50% of the restaurants are completely shut down in current pandemic. That means for cloud kitchen business, enough opportunities coming up. So if we talk about food delivery market and restaurant industry, so this is the CAGR, cumulative annual growth rate, 2016 से लेके 2025 तक. If you can just observe, it's like 35% CAGR आ रहा, जो और कोई इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ नहीं है. Cloud kitchen is an ideal business solution for if we talk about restaurant. तो रेस्टोरेंट में जिसमें डाइन इन अवेलेबल होता है, क्लाउड किचन में डाइन इन इज नॉट अवेलेबल. इट इज स्ट्रिक्टली डिलीवरी एंड टेक अवे. एंड if you talk about this, कि मार्केट कितना है, as I mentioned earlier, CAGR is 35%, and Indian cloud kitchen market अभी बात करेंगे is roughly around somewhere around $2 billion का industry. What are the growth drivers for this? Youth population, young population, many food experimentation. फिर online food delivery का जो reach जो है, Zomato, Swiggy, फिर Uber Eats था, बहुत सारे थे. Then nuclear families and affluence. The basic difference between a cloud kitchen and a dine-in restaurant is like, in a cloud kitchen, it's a low capex model. कि जैसे dine-in में आपको अच्छी जगह चाहिए, you will have to have a good location wherein you have to shell out a good rent for that. Whereas in a cloud kitchen, you don't require that. High profitability as compared to dine-in. Again, partnership जो है raw material suppliers के वो same रहेंगे. जो dine-in restaurant और cloud kitchen, there won't be much of a difference. And quick service होती है, कैसे फास्ट डिलीवरी होती है, कन्वीनियंस देते हैं. डाइन-इन रेस्टोरेंट्स में जो स्टाफ रिक्वायरमेंट जो होता है, उससे if we compare it with cloud kitchen, we don't require that much of a staff as compared to that in a dine-in restaurant. And what we cloud kitchens do is we provide experience in terms of convenience. आपको कहाँ खाना है ये आप डिसाइड करो, we'll deliver it to you. So that basically is a cloud kitchen, and that differentiates a cloud kitchen from a dine-in restaurant. Moving forward, so what exactly is a Vittlebox? What exactly are we? Who exactly are we? When we started, Vittlebox was launched in year 2016. We started, 2016 में start हुआ. We are in this format of cloud kitchen. We were the first few cloud kitchens to launch this model in Ahmedabad. We got awarded as Best Emerging Cloud Kitchen from Ahmedabad by 94.3 Radio My FM. We are mostly into deliveries and takeaways only. We have, a dynamic model, which is a quick serving space, delivery and takeaway led format with multiple brands offering varieties of cuisine. अब कौन सी brand से क्या cuisine है, उसकी क्या USP है, I'll, showcase it to you further. Going forward, what is our mission and vision? Of course, a company here, so we'll have to have a mission and vision. We're not, just doing it at random.
We have a mission to cook and deliver tasty, healthy, hygienic meals at a price that as many people as possible can afford. You know, and what is our vision? To establish Vittlebox or uske under jitne bhi brands hai as one of the most preferable brand in food delivery industry of India by providing value proposition जो मैंने USPs जो बात करी थी, जो आगे जाके मैं बात करूंगा, to the customer, to employees and our stakeholders. Moving forward, what is our business model? So it's a multiple brand cloud kitchen, which only is into delivery and takeaway of food. We receive orders via online aggregators, our own app and website. And after we receive the orders, we prepare food and deliver it. So we are giving convenience. We are providing an experience in terms of convenience to our users. As I mentioned before, Cloud Kitchen is a USD $3 billion industry by 2024 that has been, factual by Red Seer Consulting. So Vittlebox is a multi-brand company having individual unique selling proposition, USP, that caters to foodies who love to gorge on quality food backed with unforgettable taste and exotic ingredients at affordable prices. जो exact हमारा जो mission है, vision है, वो this is our tagline. This is what we do. This is what we are known for. So multiple restaurants कौन सी है अभी हमारे यहाँ पे? एक Vittlebox, then Ni Hao Namaste, Love for Khichdi's, and Square Thali. So currently we have these 4 brands with us, and इनका जो categories define करे, product categories. So these are like basically categorized into meal packs and bowls that are further classified into cuisine के हिसाब से, जो मैं अभी आगे जाके आपको showcase करूँगा. What is अभी अपने product range के बारे में बात करेंगे individual restaurants के. So what are the Vittlebox's product range? What is the tagline for Vittlebox? Like what it is known for? So our products are simple yet delightful, savory yet satisfying. That is what our products offer. That is what we are known for. कौन सी cuisines है? So North Indian हो गया, Mexican हो गया, Italian हो गया, Indo-Chinese हो गया. So our menu is more like a simple, इतना hi-fi खाना, fanciful खाना जो 5-star hotels में मिलता है वैसे टाइप का खाना नहीं है. It is very very simple, down to earth, something that you can almost have it almost daily. What is the unique selling proposition? हर एक मैंने अभी पहले भी बोला था कि we are not doing this at random. We have a USP set for each of the restaurants that targets a specific customer demographic. So what is the USP for Vittlebox? Low preparation time. So our preparation time is so low. It's less than 13 minutes, which leads to fast delivery. Within 20 minutes में deliver हो जाता है 3 kilometer के radius में. Low preparation time does not mean that the food is prepared before बहुत पुराना खाना है, ऐसा नहीं होता. We follow just in time. But उसके तरीके होते हैं कि low preparation time कैसे कम करें या कैसे reduce करें. What is the average cost per order? It's somewhere around 200 rupees. And as I mentioned before, the services that this brand offer is home delivery and takeaway. And we are rated 3.9 star by 20,000 users on Zomato up till now. ये मैं आपको दिखाऊंगा Vittlebox का अपना Zomato का page visit करके आप थोड़ी देर में. Coming to the next brand that we have is Ni Hao Namaste. Ni Hao Namaste is like food beyond boundaries. Cuisines कौन सी available है उसमें? Thai है, Malaysian, Indonesian, Burmese, Tibetan. What is the USP? The USP is quite simple over here. It is cuisine specific that fills the demand gap. अभी Vittlebox जहाँ है जिस area में, उस area में ये cuisines available नहीं है. So we have a first mover advantage in this specific area by introducing such cuisine. What is the average cost to the user? It's somewhere around 250 rupees per order. Again, the services that we offer are home delivery and takeaway. We are rated 3.9 star by somewhere around 2,000 user ratings. Coming to the next brand, third brand that we have, Love for Khichdi. So it's pressure cooked and served more. That is what we are known for. Cuisine, all जितना भी अभी खिचड़ी जो भी है available है,
all of the khichadis are available. What is the unique selling proposition or USP? It's again cuisine specific to fill the demand gap in the local area and home style preparation. जो बहुत सारे restaurants में home style preparation नहीं होता है, but for this specific brand, for this specific preparation style is home style, so that the user can easily connect कि जो खिचड़ी जब वो खाएंगे हमारी, so they have a good experience. What is the average cost per order for the user? It's somewhere around 200 rupees. Again, the services that we offer for this brand is home delivery and takeaway. We rated 3.9 star for somewhere around 10,000 user ratings. Coming to the next brand, the fourth brand, that is Square Thali. It's tasty, healthy, and daily. So Thali is basically a cuisine specific, simple product है जो almost high consumption होता है इसका. What is the USP for this? Again, it is a cuisine specific, and इसमें जैसे love for खिचड़ीज में home style preparation था, इसमें we did some market research and we found कि जो थालीज जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें 2 सब्जीज होती है. हम लोग अभी 3 सब्जीज दे रहे हैं इस वाले ब्रांड में पर थाली में, so that we have a competitive edge over the market. So that is the unique selling proposition. What is the average cost for this? Is somewhere around 200 rupees per order. What is the service that is being offered? Is again home delivery and takeaway. We recently launched this thali wala brand. I think this is the first month of operation. This is the first month of operation for this thali brand. Going forward, Vittle is well appreciated and highly accepted in the market in terms of online rating, in terms of delivery partners, in terms of reviews, and in terms of market share of business. So when we started in 2016, up till now, we have delivered somewhere around 2 lakh orders. ये कम नहीं होता, 5 साल में इतने किए हम. Why were we able to do that? Convenient packaging. We have a good repeat to new user ka ratio. Almost 70%, 70 to 75% of orders are from our repeat users. We have a very low prep time. अब से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो USP जो है 13 minutes का, that is contributing to this. Our current hit rate is 21%. So what exactly is a hit rate? Hit rate is basically कि जो user हमारे लिस्टिंग पे जोमेटो या स्विगी के लिस्टिंग पे आते हैं मेन्यू पे या ऑर्डर प्लेस करने में. सो एज पर आवर डेटा एनालिटिक्स, आउट ऑफ 100 यूजर्स 21 users are most likely to place an order. That is the hit rate that we have, and it is considered pretty good. Now this translates to when we say that our current hit rate is 21%, and if we look at 5 years का data कि जिसमें 2 lakh orders deliver किए हैं, that translates to एक menu visit हर 2 minutes में. That is a fact, and this is actually the number that you can crunch if you have a calculator with you. This is actually the fact that what we are showcasing right now. Varieties of cuisine that we offer, multiple brands. And the current share of business in Ahmedabad is 1% of orders delivered in Ahmedabad are orders from Vittle box. Abhi currently Ahmedabad mein somewhere around 25,000 orders delivered hote din mein. And currently we are doing about 250 to 275 orders per day with an average order value of 280 rupees. Swiggy पे हमारा जो listing है, we rated 4.1 star with somewhere around 1,000 plus user ratings in 10 days. Swiggy में ratings 10 दिन में update होता रहता है. They aggregate 10 day का rating and they do this. Whereas in Zomato, we are rated 3.9 star with 20,000 user ratings in the span. This is possible only because of the USP that we have. I stress the fact कि मैं पहले भी आपको बोला था और अभी भी बोल रहा कि we are not doing this business at random कि जो मन में आया वो किया and just because it is in a trend we are doing this. No, every single brand or every single restaurant that we have
is backed by a unique selling proposition. इसकी USPs ही काम करते हैं और वही ही well defined and it is going forward. मैं आपको अभी Zomato और Swiggy का जो लिस्टिंग जो है हमारा वो आपको दिखाता हूँ. Alright, so Vittlebox on Zomato 3.9 star है अभी. With how many ratings? Delivery reviews 20,000 delivery reviews है अभी as on today. इसमें लिखा आ रहा है temporary close for dining because we don't offer dining right now. It's available for online ordering. So these are the product items. You know, Mexican hot pot. You know, 4-star है for 500 votes. Go to Swiggy के dashboard पे. All right. So this is my home address, and you know, Vittlebox is based in Navrangpura. So we rated 4.1 star with having 1,000+ ratings, and look at the delivery time. 23 minutes में मेरे को मैं मतलब ऑर्डर प्लेस करूंगा Vittlebox पे तो 23 minutes में मुझे खाना मिल जाएगा. This is because of the low prep time of less than 13 minutes. This is because of the system that we have in place right now. और अभी भी वहाँ पे किचन चालू है, वहाँ पे ऑर्डर्स चल रहे हैं, and I'm here sitting here presenting my business to you. This clearly shows कि there is a system in place और मैं यहाँ पे as a owner, as a founder of this company, I'm sitting in front of you trying to explain और मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ कि there is a opportunity here and we can assist you for that. Coming back to the presentation, what is the value proposition of Vittlebox? So it is low investment that translates to high profitability. Quick preparation leads to fastest delivery, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, 23 minutes delivery time. Minimum staff requirement because we don't require serving staff and all those people. We require a minimum चाहिए. Multiple brands offering huge varieties of cuisine under one roof, backed with USP and easily accessible at multiple locations. Moving forward. So for scalability, currently we are looking at 4-4 model, franchise owned, franchise operated. What are the parameters? Ownership has to be with franchisee, investments has to be made by franchisee, operations has to be managed by franchisee. Brand की जो guidelines है वो mandatory उनको follow करना होगा. हमारे SOPs are well defined. Revenue to the franchisee, expenses by franchisee. Franchisee gets the net profit. What we get out of this is royalty. What are the growth platforms that we are looking at? One is kiosk model that is located at corporate park, malls, travel retails, high-end streets. There's a food truck park ho gaya. And the other model that we currently have is cloud kitchen, from which we can anticipate 95% of delivery orders and 5% of takeaway. So for cloud kitchens, we have a minimum requirement of 500 to 600 square feet. It is a home delivery led, partnered with online delivery aggregators. So cloud kitchen kya hota hai? That I've already explained it to you. And I assume that almost everybody knows what exactly is a cloud kitchen. So I will not will push further for the presentation. For kiosk model, we have a requirement of somewhere around 200 square feet. अच्छा, ये जो area जो बता रहा हूँ, that is carpet area. It is not a total area. We require a carpet area of 200 square feet. Where इसका कहाँ पे location होना चाहिए? तो malls हो गया, फिर corporate locations हो गए, education hubs हो गए, food truck parks हो गए, यहाँ पे. And this is a pure takeaway concept. There will be no deliveries from this kiosk model because it is already located at such a location कि वहाँ पे आपको walk-ins इतने मिल जाएंगे आपको. Going forward, what are the attractive financials for this? अच्छा, मैंने आपको बता दिया अभी कि what is the growth plan. Okay, we are looking at franchise owned, franchise operated model. What are the two types of model growths? One is cloud kitchen, another is kiosk. Multiple brands आपको मिलेगी operate करने के लिए for cloud kitchen, not for kiosk. So अभी what is the investment that we are looking at इसके लिए? Area required, जैसे मैंने पहले बताया था, carpet area, it is 500 square feet, kiosk is 200 square feet. For cloud kitchen, we are looking at an investment of 21 to 22 lakhs, of which fixed capital है, जिसमें equipments हो गए, infrastructure cost हो गया,
वो 6 to 7 lakhs है. एंड वर्किंग कैपिटल मतलब आपकी इन्वेंटरी हो गई, फिर आप मतलब सॉरी स्टॉक्स हो गए आपके, फिर आपका थोड़ा बहुत जो रेंटल जो है वो आप थोड़ा बहुत पैसे रखोगे आप अपने पास, दैट इज 1 to 2 lakhs. फ्रेंचाइज फी इज 12 lakh rupees फॉर क्लाउड किचन. इसमें जीपी आपका 60 अप्रोक्सीमेटली 59% 60% जितना बैठेगा. The royalty that we will take from this is 6%. Payback period is somewhere around 24 to 25 months, and we are looking at an agreement period of 5 years. See, I myself am a person who is more interested into a long-term association. I believe in my brand, और मैं ऐसा मतलब I believe कि I'm an ethical person. I believe in relationships. कि साथ में मिल के आगे बढ़े. ऐसा नहीं कि एक one time हो गया, and then we go on a separate path. No, we are here. When we'll take this as a responsibility, we'll take this as an authority, and I'll be obliged. It will be under our obligation to provide you such performance. Kiosk के लिए अभी बात करें, ये क्लाउड किचन का आपको समझ में आ गया. Now we talk about kiosk. So for kiosk we require 200 square feet का area, carpet area. Total investment is somewhere around 14 to 15 lakhs. जिसमें से fixed capital is again 7 to 8 lakhs. आप नोटिस करना कि kiosk में fixed capital बढ़ रहा है क्लाउड किचन से, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े डिस्प्ले पैनल्स और सब लगेगा, अट्रैक्टिव डिस्प्ले पैनल्स चाहिए होगी kiosk में. वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा आपको यहाँ पे kiosk में. Working capital is somewhere around 2 to 3 lakhs. Franchise fee is 4 lakh rupees. GP इसमें कम होगा owing to higher OPEX. GP is somewhere around 50%, 50-55%. What we expect from in terms of royalty from to the brand is 5%. Payback period is somewhere around 7 to 18 months, and again agreement period is 5 years. अच्छा, मैंने आपको फिक्स कैपिटल जो बताया 6 to 7 दोनों मॉडल्स के लिए. Alright, this is under assumption कि whatever we buy for the infrastructure are brand new condition, are in a brand new condition. We are always open कि अपने second hand भी खरीद सकते, provided they are in a good condition. Currently at Vittle Box in Ahmedabad, when we started, we had purchased all the brand new equipments. Moving forward, I hope कि ये आपको clear आ गया. If you have any doubts, please shoot up your questions on Q&A, and we'll get back to you on that. Moving forward, what is the ideal partner profile that we are looking at? कि जिनका इतना strong financial bandwidth भी नहीं चाहिए इतना, and operational capabilities थोड़ा बहुत इनको knowledge है तो ठीक है, नहीं है then also it's fine. So basically, we are going to, operate it for you. We are going to be so in terms ki we are going to operate to you, it does not mean that, we'll have certain employees or certain team members from the central team that is present at your location carrying out operations. No, that won't be the case. होगा क्या है इसमें कि how when we say we will operate it for you, we mean कि हमारी SOPs होगी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होगी जो स्टैंडर्डाइज्ड है, वो फॉलो कर रही है. दैट इज इट. उनका जो पार्टनर प्रोफाइल है, उनका स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए कि लोकेशन आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करे एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस. फिर दे नीड टू हैव ऑपरेशन फिट के आउटलेट ऑपरेशंस, ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वेंटरी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. सो बेसिकली ये सब एसओपी में मेंशन्ड है दैट वी एंश्योर दैट वी वांट कि जो पार्टनर प्रोफाइल है वो इसको एसओपी को थॉरोली इम्प्लीमेंट करे. दैट इज इट. ऑलराइट. So coming to that point, ideal partner profile, we require fresh investors keen to enter in food service industry. Optional है कि if you have a prior experience or knowledge of delivering food service, बाकी हम है वो कर देंगे. Moving forward, what are our rollout plans? So we are basically, we have targeted market and we have, divided into phase wise, 3 phase में cover करना चाहते हैं. First phase is obviously where we are located at. It is in Ahmedabad, Gujarat, Gandhinagar, Surat, Baroda, Rajkot, and Anand. Phase 2 is Mumbai, Pune, Nagpur. Phase 3 is Delhi, Chandigarh, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata. This is our plan. But obviously we are still we are open for discussion. If if you're based somewhere out of Ahmedabad, somewhere out of Gujarat, और आपको कहीं और पे आपको सही लग रहा है, we are open for discussion. We can always explore the possibility
We are not that rigid. I myself am not that rigid. We're flexible. If you're interested to set up this, sort of model somewhere at your location that is based out of Gujarat, we will connect, we'll discuss and see the possibility. Okay, let's move forward. So once you do, once you get into this franchise model, what sort of support function that you can, avail from us, or what we will do for you exactly in terms of, franchise model में. So pre-opening will help you with site selection. Obviously, we'll have inputs from you as well कि कौन सा site select करना है. Site equipments में infrastructure पूरा develop करके हम देंगे आपको कि कौन से equipments लगेंगे, preferred vendors कौन से है आपके area में जहाँ से आप खरीद सकते हो, right? फिर regulatory compliances जो है जैसे FSSAI हो गया, then local municipality taxes हो गए, वो सब regulatory compliances में आपको help कर सकते हैं हम लोग. Equipment sourcing मैंने आपको बताया. मार्केटिंग में लोकल लेवल मार्केटिंग है, वो कैसे करेंगे उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें. फिर आपका जो एम्प्लॉइज जो होंगे, जो टीम मेंबर्स जो आपके यहाँ पे होंगे, विल हेल्प यू रिक्रूट, विल हेल्प विद द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एज वेल. पोस्ट ओपनिंग में क्या होगा कि हम विल हेल्प यू विद द लिस्टिंग ऑन फूड एग्रीगेटर्स. वो पूरा हम ही मैनेज करेंगे. आपका लिस्टिंग भी हो जाएगा, उस पर पूरा मैनेज भी हम ही करेंगे कि कितने ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे वो ऑर्डर्स जनरेट करना, वो सब हम मैनेज करेंगे आपके लिए. यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. उसमें बेसिकली व्हाट वी वांट फ्रॉम यू टू डू इज कि एंश्योर कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो बनी है, जो डिफाइंड है, यू जस्ट हैव टू एंश्योर कि दैट इज बीइंग thoroughly implemented at your location. That is it. बाकी हम पूरा टेक केयर कर लेंगे. आपको पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे. We'll have a system in place wherein wherein the franchise outlet and the central production will communicate with each other. अच्छा, ये सब तो मैंने बताया, बट एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि हमारे जितनी भी जो रेस्टोरेंट्स है उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स है, नॉट ऑल ऑफ देम आर फ्रोजन फूड. कि आपको बस रीहीटिंग करना है और खत्म हो गया. विटल बॉक्स जितनी भी ब्रांड्स है सब में इट इज फ्रेश फूड प्रिपरेशन. सेमी प्रोसेस्ड फूड होता है, वो फ्रेश फूड में कन्वर्ट होगा एंड देन इट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द यूजर्स. So that is sort of an association that we are looking at. Central marketing hai, local outlet marketing hai. We are open for discussion with that. कि इसमें local level marketing क्या हो सकता है, central level marketing में क्या हो सकता है. So mostly, when I say that it's a long-term association, and we are looking at a long-term association. So everything shall be put on a table. We'll sit across the table, we'll discuss, and we move forward. So that is our approach, and I hope कि मैंने अभी तक जितने भी queries आपके होंगे कि I was able to demonstrate कि what my business can offer to you and how we can move forward. And that concludes my presentation. Thank you so much कि आपने patiently सब कुछ आपने सुना. Now I'll stop sharing my screen and moving forward with the presentation. Thank you. Thank you so much, Darshit, for such a lovely presentation, detailed enough. Now I will invite Mr. Saras Gupta, who is a training head at Franchise India, leading the entire training vertical for us. Thank you, Saras, for joining this webinar with the question and answers. Thank you very much, Archana, for introducing me. And Dharanjit, definitely, as Archana mentioned, a fantastic presentation and a very detailed one. Coming from the training background, I also have to commend you. जिस तरीके से आपने presentation दिया आज, with a normal pace, लोग understand कर पाएंगे. It was coming, I believe, it's coming from the same pedigree. So thank you so much. Thank you, Cyrus. Great. So Dharanjit, I have a lot of questions and a great response that I see during this in this webinar. So कुछ questions मैं यहाँ पे put up करूँगा on behalf of audience, and we are expecting responses on that. Sure. सबसे पहले somehow, you have just talking about the brand again, Vittle box.
जी. ये कहाँ से आया, ये नाम कहाँ से आया? What is Vittle box? Okay. So Vittle box is essentially, Vittle is essentially nutrients, कि जो आप कोई भी खाने में से आपको जो nutrients मिलते हैं, that is Vittle. And box is packed, so that is why Vittle box. Pack of nutrients. Yes, yes, yes. So healthy food rather, जैसे हम देख रहे थे आपके brands. हाँ. It's definitely healthy food. Great. सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये लगा यहाँ पे क्लाउड किचन का, बिकॉज वेरी ट्रू टू से दैट फॉर ऑडियंस ऑल्सो, जितने बिजनेस हमने इस कोरोना टाइम में देखे हैं, प्रॉब्ली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितने ज्यादा बंद हुए हैं, स्पेशली बिकॉज हाई रेंटल्स दैट वी टॉक अबाउट, एंड वी आल्सो नीड टू ओपन अ रेस्टोरेंट, वी नीड अ स्पेस जहाँ पे हम लोग फुटफॉल ज्यादा अच्छा होगा. बाय डिफॉल्ट इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ रेंटल्स. Plus, I come from the same pedigree, so एक टाइम पे मैंने भी एक रेस्टोरेंट रन किया था. अच्छा. And I can really understand, the importance of a cloud kitchen. Agree. मेरी कॉस्ट यहाँ पे सच में बहुत बच रही है. Because one, I'm saving on rental, because I don't have to be present on the ground floor in a footfall market. I can be just on the first floor, the second floor, or maybe in a low line area. So शायद जो मेरा रेंट 50,000 या 1 लाख रुपए था, वो घट के मेरा 10 से 15,000 रुपए रह जाता है. Okay. Second, मेरे को एरिया आधा लगेगा because I don't have a sitting area. Agreed. Goes legs. The also the part is, of course, I don't have to initial cost जो होती है किसी sitting restaurant को रन करने के लिए, 30-35 लाख से शुरू होता है, वो बिल्कुल सेव हो गई because मेरे को इंटीरियर्स में कोई स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है. Agreed. Crockery, cutlery, all finished. No hassles of crockery, cutlery, breakage, maintenance, and all that. Agreed. Staffing. Yes. आधी हो गई है मेरी, because again in a sitting restaurant I have to deliver, बाहर का staff, serving staff plus the kitchen staff. हाँ. बाहर का staff मेरा खत्म हो चुका है यहाँ पे. Also I talk about operational cost. किसी भी रेस्टोरेंट को रन करने के लिए ना 2 चीजें हमें जरूर ठंडी रखनी पड़ती है, बाहर का एरिया, अंदर का एरिया. बाहर मेरा AC कस्टमर खराब होने से बचाता है, और अंदर मेरा फ्रिज खाना खराब होने से बचाता है. Agreed. And of course, as we go in commercial places, मेरा running cost, operational cost बहुत ज़्यादा रहता है. Agreed. I'm saving on my operational electricity cost. Yes. Lot of different advantages I'm sitting, and the major reason I found in my business was a failure is because of logistics. So मेरे को अपने ही bikes लेना पड़ता था, and you have to manage all this stuff. But now with the giants coming in like Zomato and Swiggy, it has gone completely down. Agreed. So, I just share some money with them, and probably my logistics are ready. Agreed. So I think cloud kitchen is a great concept, and I think the predictions are very much right in the manner. क्योंकि कोरोना में कुछ सीखे हैं हम लोग तो घर बैठ के खाना. जी. लोग शायद convenience. Yes. Convenience accept कर चुके हैं, and especially nuclear families जो होती हैं वहाँ पे, we see that the tendency is more because especially working men and women. Yes. They intend to order food from outside. Agreed. Yes. Safety has taken over because of Zomato, Swiggy. Nobody has to call. Agreed. While you're working something, order food for your child right from your own office. So definitely the business is going great. Also, congratulations on completing your 5 years and 2 lakh of orders. It's a good number. कर दिया हम लोग ने कर दिया. Absolutely. So that is only because we have consistently delivered product. Food speaks. After all, कि आपकी USPs है. When you are running a brand with USP back, and अच्छा इसमें competition भी है. But if you are delivering a good food, by end of the day, food talks about your brand. Absolutely. If you are delivering a good experience, good food, quality food at at a consistent level, that matters the most. और इसी की वजह से we are able to reach a point where we are right now. And it's not just because to be honest, जैसे मैंने पहले भी बताया था, when I introduce myself, I don't belong to this industry. मुझे भी 5 साल हुए, जितने साल Vittle Box को हुए उतने साल मुझे भी हुए. I belong to manufacturing industry, but only because of our approach towards this whole business. I personally believe as a management, a professional, that my team members are my true assets, and उन्होंने भी बहुत कुछ इसमें efforts लगाए हैं,
and the way we are moving forward, हमने जो उनको जो environment provide किया है team members को, so 5 years में हमारा attrition rate बहुत low है. I still have founding members जो थे, founding मतलब जब चालू किया था Vittle Box, उस टाइम के जो members थे, chef थे, assistant chef थे, वो आज के दिन में भी हैं हमारे साथ. So that is something that we do. So जैसे हमने mission में जो बताया था कि we value proposition to users, employees, stakeholders, तो इनको भी value proposition में दिया है. Absolutely. So that is the case. Great, thank you so much. Just for my audience, concept अगर बहुत लोग नहीं समझते हमारा concept cloud kitchen का, बहुत innovative concept है. So ideally, I'm sure हम सब किसी रेस्टोरेंट में गए हैं and we see one menu. इसमें पहले पेज पे खिचड़ीज होंगी और different menus होंगे. So probably if I transfer it to the online model, अगर मैं Zomato या Swiggy पे जाता हूँ, मेरे को सिर्फ एक रेस्टोरेंट का नाम दिखाई देता है और वहाँ पे then I see different menus, different options of the same restaurant. So just in case if my restaurant is not getting a good rating, I may not attract a lot of customers there. But over here, with the concept of cloud kitchen, I think I've covered that risk also. बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है. आपको Zomato पे 5 अलग रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे, 5 अलग रेस्टोरेंट्स. And any customer who is ordering food, so उसको बेशक खिचड़ी ऑर्डर करना है, एग्स ऑर्डर करना है, any other food items that we cater, कुछ भी ऑर्डर करना है, उसको 5 अलग रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे. बट फायदा हमारा क्या होगा? सारे ऑर्डर्स हमारे पास ही आ रहे हैं. So God forbid, just in case, अगर मेरा एक आइटम नहीं अच्छा लगा किसी को, so that would not lose all my customers. क्योंकि मेरे पास 4 चीजें और हैं जो बैकअप करने के लिए हैं. So of course that's a concept of cloud kitchen, a very unique concept because ultimately same chef था पहले भी मेरे पास, same staffing थी मेरे पास जो सारे आइटम्स बना रहा था. अभी भी सब कुछ सेम है. So same infrastructure से एक जगह से मैं 5, probably 7, probably 10 आने वाले टाइम में अलग-अलग ब्रांड्स में cater कर पाऊंगा. Is that correct, sir? Agreed. Yes, that is actually the case. And also इसमें आप मल्टीपल रेस्टोरेंट्स होने का ये भी एक फायदा है मल्टीपल ब्रांड्स की. आप जो शेयर ऑफ बिजनेस है उसको भी आप कवर कर पाते हो. You cannot anticipate or you cannot actually cater to all of the customer demography. आज Vittle Box की कस्टमर डेमोग्राफी अलग है, लव फॉर खिचड़ी की कस्टमर डेमोग्राफी अलग है, निहाव नमस्ते की कस्टमर डेमोग्राफी अलग है, स्क्वायर थाली की कस्टमर डेमोग्राफी अलग है. तो ये केस है. Thank you. Sir, now time for taking some questions from the audience. Sure. Sure. पहला क्वेश्चन आ रहा है राहुल जी से. Rahul ji is asking, how is the food prepared? Because that's over USB 13 minutes में मेरा food ready हो जाता है and probably next 15 minutes में deliver होता है. So within less than 30 minutes, I get my food. So what is the technique? ऐसा कैसे कर पाते हैं हम लोग? Okay, so it is basically bulk cooking or semi-processed होता है. And recipes and when standard operating procedures are in place, it is possible. Also, we believe less is more. हमारे आप मेन्यू आप चेक करोगे ना तो आपके हमारे मेन्यू में आपको 100-150 आइटम्स नहीं दिखेंगे. We have limited menu items, 40 आइटम, 45 आइटम, that is it, 40-45 items. And उसकी वजह से it is quite possible for us to estimate. पॉसिबल डिमांड एस्टिमेशन भी होता है हमारे पास कि अभी दोपहर में 12 से 1 में थाली जाती, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. 5 साल का डेटा है हमारे पास, वी एस्टिमेट. ये भी एक तरीका है. फिर प्रोसेसिंग जो होता है, ऑटोमेशन नहीं है इसमें अभी भी. इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. ऑटोमेशन आने वाला है, इंट्रोड्यूस होने वाला है. देयर आर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री हु आर प्रिपेयरिंग मशीन्स कि जो पूरा ऑटोमेशन पे जाने वाला है. बट एज ऑन नाउ वी डोंट हैव दैट. एज ऑन नाउ वी हैव नॉट येट इम्प्लीमेंटेड इट. सो क्या सर ये सेमी कुक्ड फूड होता है? इज इट फ्रोजन एंड एज पर द ऑर्डर इज टेकन आउट देन मेड? हाउ इट इज डन? दैट्स व्हाट यू. सो सेमी प्रोसेस्ड होता है. इट इज नॉट फ्रोजन कंडीशन. इट इज नॉट इन अ फ्रोजन कंडीशन. It is in a semi-processed, semi-processed form. So if we talk about curry, कोई भी curry आप पकड़ लीजिए तो curry में it's basic कि जो उसका जो बेस होता है, tomatoes and onion base, वो प्रिपेयर्ड होता है. अब जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं and because we have limited items in the menu,
तो वी नो कि एस्टिमेशन पे कि सॉरी इस पे कि आज के दिन में क्या ऑर्डर्स, कौन सी आइटम के ऑर्डर्स ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से प्रिपरेशन होती है. सो व्हाट वी डू इज व्हेन वी रिसीव एन ऑर्डर फॉर एग्जांपल एक थाली का एक ऑर्डर आया, और लेट मी रिफ्रेज इट, एक मैक्सिकन हॉटपॉट का ऑर्डर आया. सो मैक्सिकन हॉटपॉट हैज थ्री डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और थ्री डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है उसमें. एक मैक्सिकन राइस होता है उस पर, फिर उसके ऊपर लेयर होता है मैक्सिकन करी का, उसके ऊपर लेयर होता है चीज सॉस का, और उसके ऊपर लेयर होता है नेचुरल्स का. तो एक ऑर्डर आया मैक्सिकन हॉटपॉट का, तो जब हम एक ऑर्डर आएगा एंड वी नो कि ड्यूरिंग दिस टाइम विल रिसीव एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स 12 to 1 में. तो एक ऑर्डर जब आएगा तब हम लोग उसके साथ में 5-6 मैक्सिकन हॉटपॉट्स का जो बेस प्रिपरेशन है, मैक्सिकन राइस, मैक्सिकन करी, ये सब बना देंगे एंड इट विल बी मेड टू अवेलेबल फॉर पैकिंग. तो इसकी वजह से वी आर एबल टू रिड्यूस अवर लो प्रेप टाइम. So मेरे पास central kitchen का concept नहीं है. Everything is prepared at the at the local kitchen itself. आप लोग क्या देते हैं? Probably the menu, the recipe, the Yes. training Yes. of how to prepare that thing. Yes. So that's how probably you maintain the standardization क्योंकि training central होती है. Agreed. And how do you maintain the quality? How do you do quality checks? Because बहुत सारे restaurants में देखा गया, especially वो जब franchising में आते हैं, they start using their own material. Probably you have some specified कि आपको X quality का X brand का चीज use करना है, cheese no probably. Agreed. मैं नहीं use करता हूँ. How would you maintain it? So how will we ensure this is via supply chain management. आपको वेंडर से आप मान लो आपने फ्रेंचाइजी लिया हमारा, so what we will do is आपको कोई रॉ मटेरियल सोर्सिंग किसी के थ्रू नहीं करना. नो, लाइक वी विल नॉट गो थ्रू दैट. जितने भी वेंडर्स है वेजिटेबल्स के, ग्रोसरी का, वो सब हमारे पास आएगा. हम उसका क्वालिटी चेक, पीडीआई वगैरह सब कुछ करेंगे, और आपको हमारे से लेना. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एंश्योर कि जो राइस की जो क्वालिटी जो है, आटा की जो क्वालिटी जो है, दैट रिमेन्स स्टैंडर्डाइज्ड. सो बेसिकली Vittlebox is going forward towards एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं हम लोग अभी, जिसमें आपको वेंडर के साथ कोई डीलिंग्स नहीं करनी. आपके लिए वेंडर हम हुए, एक सेंट्रल प्रोडक्शन हाउस होगा आपके सिटी में, वहां से सब आपको सोर्सिंग करना होगा, और वो भी हम we will control that, we will monitor. I would not rather say that we will control it, we are going to monitor it. कि सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी अभी ऐसा है कि आपके यहाँ पे कोई भी किसी इन्वेंटरी लेवल का मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, विल सेंड दैट रॉ मटेरियल टू योर किचन. तो रॉ मटेरियल भी आप ही दे रहे हैं? हाँ, हम ही प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपका हेडेक कम हो जाएगा कि सब रॉ मटेरियल का क्वालिटी इंस्पेक्शन करो. हमें ऑलरेडी पता है कि कौन से वेंडर से क्या रॉ मटेरियल खरीदा जा सकता है. प्लस we are able to negotiate better pricing because बल्क में ऑर्डर है, प्लस हमारे ऑलरेडी वेंडर्स के साथ इतने रिलेशन बन चुके हैं. So जो डिलीवरी होगा रॉ मटेरियल का, it will be done by you or the vendor directly, and who will be done by us. As on now it has been हमारा जो अभी जो SOP जो डिफरेंट है, in that it has been mentioned that the deliveries will be done by us, will be done by the हमारे सेंट्रल प्रोडक्शन से होगा. थैंक यू. रुपेश जी का एक क्वेश्चन आया है कि हम लोग वेयर ऑल एरियाज आर वी लुकिंग फॉर एक्सपेंशन. सो आई थिंक वी ऑलरेडी हैव एन आंसर फॉर दिस. अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, आनंद, एंड मुंबई में पुणे, नागपुर, देन वी गॉट दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई एंड कोलकाता. I think you also said in case अगर और भी कोई इसमें आना चाहिए, yes, and of course we can have a conversation on that grounds. Agreed. Yes, we are open for that. We are always open to explore the possibility. This is a choice of preference that we have mentioned as per our phase, but that does not mean that we are limited to this. कि हमारा जो प्लान है उस पे हम rigidly focus करेंगे. No, that's not the case. We are flexible. Thank you. अगला क्वेश्चन दिपेश जी का है. I see that what he's asking is probably please send me a proposal. He's given us an email address. Definitely Dipesh ji, and I've also mentioned my hotline number of Franchise India. So if you give us a call, we will be more than happy to take your call and give you all details and even share any other information apart from it.
Next question is coming from Mr. Jignesh. जी. How will you tackle competition with same USP players? That's a good one. वेरी गुड वन. मैंने भी वही देखा था, तो मेरे को आई वाज वेटिंग फॉर दिस कि हाँ जिग्नेश जी का आएगा. तो थैंक यू सो मच जिग्नेश जी. यू नो आपने एक्टिवली ये पार्टिसिपेट, मतलब आपने एक्टिवली ये पूरा सुना मेरा, एंड यू पार्टिसिपेटिंग दिस, एंड इट्स अमेजिंग क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट. कि चलो यूएसपी तो है वेल डिफाइंड कि यू नो देयर इज अ यूएसपी बैकिंग अप ऑल द ब्रांड्स, और वो ऑर्डर जनरेशन करेगा. ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन शायद आपने यू नो एक बात पे ध्यान आप यू नो लेट मी रिकॉल दैट कि हमारा रिपीट टू न्यू यूजर का जो रेशियो था 70 to 75%, तो वो यू नो इसलिए हुआ क्योंकि वी हैव कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. आफ्टर ऑल जितना भी आप मार्केटिंग कर लो, जितना भी आप प्रमोशन कर लो, आफ्टर ऑल फूड स्पीक्स अबाउट योर ब्रांड. आपका जो आप मार्केटिंग करके आपके पास न्यू यूजर्स आएंगे, बट वो अपना बिजनेस नहीं है. यू नो द रियल बिजनेस इज फ्रॉम द रिपीट यूजर्स कि यू नो उनको खाना पसंद आना चाहिए, उनको डिलीवरी कन्वीनियंस, जो डिलीवरी टाइम में जो कमिटेड है वो डिलीवरी टाइम उनको उस टाइम पे उनको खाना मिल जाना चाहिए. Absolutely, absolutely. तो दैट इज हाउ यू एंश्योर. आजकल बहुत सारे क्लाउड किचन ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, बट उसमें से वही विक्टोरियस होता है जो कंसिस्टेंटली ये सब डिलीवर कर पाते हैं. You know, Thank you, sir. अगला क्वेश्चन आया है सरिता जी का हमारे पास. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट पुशिंग बिकॉज that's okay, I can understand. इन टाइम. सरिता जी पूछ रही है, बहुत बेसिक अच्छा क्वेश्चन इनका. Why this concept of cloud kitchen more expensive than kiosk? I think you already answered. Yes. Kiosk में मैं सिर्फ एक ही ब्रांड खोल पाऊंगा, हाँ. and probably cloud kitchen में मेरे को प्लथूरा ऑफ द 5 ब्रांड जो मेरे पास ऑलरेडी हैं वो मैं 5 खोल पा रहा हूँ. जी. Any plans of expansion? हम लोग और भी कोई ब्रांड्स डालने वाले हैं आने वाले टाइम में? Yes, we have 2 more brands in the pipeline currently. Cuisine specific है उसमें वो भी. Okay, that's nice. And next question is coming from Mr. Sanjay. Is franchise available for Surat, Gujarat? I think Yes, that's it. Okay. Dipesh ji बहुत actively participate कर रहे हैं. I think he's a potential person who can see a lot of potential. So kindly compare. Say rental cost is 1.5 lakhs to 2 lakhs in case of family restaurant with delivery apps. The question था चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ. Rebel Brewed, fresh menu, box players are already in market. How can we differentiate us with established brands? I think USP हम already बात कर ही चुके हैं इसके बारे में हम लोग. Next question is Sarita ji again. Are you open for pan India? We have already answered that question. How will we supply the food chain of food ingredients? That's also been answered. One-stop shop. You just have to call, or probably it's automatic controlled. Minimum levels यहाँ पे control करे जाते हैं. The traditional way, like, you know, kitchens में box में mark करते थे कि इससे नीचे होगा तो मेरे को fill up करना है. Same way it's done by the computer G itself now. Agree. Dipesh ji is asking again, costing, food cost, manpower cost. Yes, that's one of my questions also. सर कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग प्लीज. ओके. ऑपरेशनल कॉस्ट में फूड कॉस्टिंग कितना आ रहा है मेरा, कितना स्टाफ मेरे को रखना होगा, एवरेज सैलरी मेरी क्या आएगी. सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट ऑपरेशनल कॉस्ट. सो ऑपरेशनल कॉस्ट में बेसिकली नंबर 1 इज COGS, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, जिसमें फूड कॉस्ट हुआ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली यू नो 35% ऑफ नेट सेल्स. राइट. फिर उसके बाद आया आपका यू नो जो GP जो बचा उसमें 35% माइनस करके 10% would be your packaging cost, कि जो पैकिंग मटेरियल जो लगेगा वो. फिर जो GP जो रहता है 55%, उसमें से यू नो योर सैलरी एंड रेंटल कॉस्ट और ये सब डिडक्ट होगा. When we start, we are looking at team of you know hardly 7 to 8 people. We don't require more than that. और उनका एवरेज मतलब आपका मंथली सैलरी उनका एम्प्लॉयज का समवेयर अराउंड टू द ट्यून्स ऑफ 70-80,000 रुपीज जितना होगा. जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे यू नो वी कैन इंट्रोड्यूस मोर टीम मेंबर्स, बट वी आर कैपिंग इट एट 10. 10 से ज्यादा अपने अभी नहीं करेंगे. एंड यू नो वी आर कैपिंग द सैलरी टू 1 लाख रुपीज. इससे ज्यादा सैलरी अभी के लिए जरूरत नहीं है. फिर आपका रहा यू नो रेंटल है.
For cloud kitchen, your rental cost should, what we are capping it at is at somewhere around 35-40,000 rupees for a 500 square feet wala area. For kiosk it can, based upon a location के mall है, तो वहाँ पे वो लाख रुपए तक भी जा सकता है और वो कर सकते हैं, not an issue. Okay. So ultimately, if I talk about कितना profit मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, probably average on sales of this much, I can look at this much profit. वो prediction कैसे So करें? gross margin GP, as I mentioned before, is somewhere in the tunes of 60%, 55 to 60%, जो मैंने presentation में भी आपको दिखाया था, and kiosk में भी उतना ही है, 50-55% जितना kiosk में हो रहा है. Okay. और फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से फिर ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह जो भी है वो रिड्यूस होके आई थिंक द टेक अवे वुड बी समवेयर अराउंड इन द ट्यून्स ऑफ 15-20% इतना होगा टेक अवे, In fact, मैं ऑडियंस से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, probably just reach out to us, we can give you the basic information and then we can go one on one with Mr. Dharit and he'll be more than happy to explain you in detail. Sure. Looking at area specific, because area specific sales होंगी, accordingly we'll be able to take out the margins. Agreed. Ravi ji is asking for taking a franchise. Is there any location specific? Because I'm from Hyderabad. Let me know. Do you have any outlets in Hyderabad? No, we do not have current outlets. Not currently. So of course we can expand. Yes. Jignesh is also asking, how do you see competition with same USPs? Again, consistently provide करना है खाना, and competition is fierce. This is a hyper local competition. The हमारे 3 kilometer के radius में there must be thousands of restaurants there. But सबकी अपनी अपनी USPs होते हैं, किसी के तो USPs होती भी नहीं, just because everybody else is there in the market, that person or that restaurant will also enter into the market. But it has to be a systematic approach. इसलिए तो इतना टेंशन नहीं लेना है इस पे कि हाउ डू यू सी कंपटीशन कैसे टैकल करके. देयर आर वेज ऑफ टैकलिंग इट. यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू एंश्योर कि जो फूड क्वालिटी है दैट इज अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड दैट व्हाट द यूजर वांट्स. So 2-3 questions और लूंगा बस before we end. We are running close to the end. आपने already बोला कि equipments will be a part of the fee that the investment which is there. Yes. So, we have a question on there and probably once we do one-on-one interactions, हम लोग पूरी list बता सकते हैं आपको कि क्या-क्या equipments आपको share करे जाएंगे. But just to cover that part, majorly whatever is required in a restaurant, in a kitchen, will be all provided in that amount. Agree. So starting from A to Z, anything which is required will be covered that. So आपको बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ेगा. Also, I think if I remember, you also spoke you're also flexible in case if somebody is buying a used or a second equipment. Yes. We are open for that. We are not very stagnant कि अगर अच्छी working condition में है, so we can go on that too. बहुत सारे restaurants close हुए हैं, so probably we can save that money while we are. Exactly. Perfect. Absolutely great. So ट्रेनिंग की बात करते हैं. आपने ट्रेनिंग का मैं बोला कि आपको स्टाफ को आप प्रोवाइड करवाएंगे. So will this guy will be coming to you? या आपके लोग किचन में आके ऑपरेशनल रन करा के फिर जाएंगे? How is the operational help which is given? So training is divided into two different modes, two different parts, two different phases you can say. एक होगा कि उनको हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुलाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे. एक बार हमारे एंड पे ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर उनको वो टीम मेंबर्स को आपके यहाँ पे डिप्लॉय होगा और फिर उनके डिप्लॉयमेंट के बाद हम थोड़ा बहुत उन पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज ए मॉनिटर करेंगे. ये एक पूरा फेज वाइज आपका डिवाइस है. तो क्या आपकी तरफ से कोई विजिट्स भी होंगे आउटलेट्स पे, रेगुलर विजिट्स, सरप्राइज विजिट्स टू इंश्योर दैट यस डाउनग्रेड तो नहीं हो रहा है, कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे? Agreed. So there will be account managers, designated account managers जो आपके outlet के लिए designate किया जाएगा. That person will be responsible for growth and P&L of your business. Okay. I think I'm done with all the questions. What is the net margin? It's already done. Break-even point. So what is your estimation में break-even pickup possible? Dipesh ji is again interested on that. A lot of financial questions he's asking, which is true. That's nice.
So if we talk about break even in terms of fixed cost, जो आपका fixed cost for a cloud kitchen is 1.5 lakhs, मान के चलो नहीं 1.5 भी नहीं 1.25 lakhs का जितना होगा. And when we consider 200 rupees ka average order value, that translates to what, 600 orders? 600 into 200 is, yes, 600 into 200, yes, it is 1.2 lakh. And Right. so if we divide 600 by 30 days in a month, that translates to 20 orders per day. Okay. That is achievable in 2-3 months. That is achievable. Sir, एक last question, because हम लोग सिर्फ model पे बात कर रहे हैं, हम लोग probably on the digital part. How do we ensure कि मैं हमेशा top पे रहूँ? क्योंकि top most priority is like, what kind of support I'm asking you is, are we getting from your side regards to marketing, regards to staying on the top in that list of ordering Zomato or Swiggy apps? Acha, okay. With regards to listing on food aggregators, we are going to manage it for you. Food aggregators पे जो marketing भी जो होगा, वो भी हम करेंगे. You don't have to shell out anything for that. Until and unless, कुछ उसका define करते 1% of your revenue or something like that, which is not being defined as on today. We may not. But अभी के लिए, फिलहाल के लिए, we are going to do that for you. अब वो कैसे ensure करेंगे, that is something that we will not disclose, to be honest. कि but ये है कि हम आपको orders generate करके देंगे. Because after all, we consider you as a business partner, and we are looking at a long-term association. So it's not that we are going to run away. कि नहीं आपसे पैसे ले लिए, हड़प लिए और चले गए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. We are in here together. आप growth करोगे तो मैं growth करूँगा. Absolutely. It's as simple as that. आप सर्वाइव कर पाओगे, आप सस्टेन कर पाओगे, तो मैं सस्टेन कर पाऊंगा. So it becomes an obligation for me to to provide or to demonstrate likable performance for your business. ये होगा. I think we have covered almost all. Kindly compare salary rental, it's already there. Last of all, audience के लिए, of course, we are doing a discovery day on 29th of March, and where we'll be booking the slot directly with the owner, Mr. Dharit, and he'll be more than happy to take the slot. So discovery day is a day जहाँ पे Mr. Dharit का पूरा day book करेंगे, and we will ask all the investors जो इनसे बात करना चाहते हैं, questions पूछना चाहते हैं, clarification चाहते हैं. We'll book the slots and accordingly make you meet one-on-one basis. So yeah, I think that should be all good, and you can please reach out us on our direct number, the hotline number, which I've already mentioned on the chat box. That's it, and we are looking for a great response. Thank you, Mr. Dharit, and over to you, Archana, for your last comments. Thank you so much, Darshit. Thank you so much, Saras. Thanks all the dear participants for joining in today. Yes, rightly mentioned by Saras, we are booking your slot for Discovery Day, which is happening on 29th, where you have chance to meet, interact with call, Zoom, or in case you are in Ahmedabad, you wish to meet him, please book your slot with us at our business hotline number, which is 9717683838. Also, write to us at feedback@franchiseindia.in. Share your valuable suggestion, feedback, any kind of the query, any kind of the support required at our different social handles. Also, connect with Gaurav Sir and Sonia Ma'am, the management team of Franchise India, at their LinkedIn IDs. Entire information, entire portfolio will give you maximum information about different business opportunities, different events, be it a physical or digital, we organize for you. And tomorrow, under our prime time 12 p.m. webinar, we are bringing the brand JSW. That's the brand we are bringing. The brand comes from the house of Jindals. And tomorrow they'll be talking about how you can become a partner with them for home construction solution. That's the opportunity for you. Do registration. Registration is free of cost, and it's very easy to get the registration link from our site. Either call us, connect us, SMS us, or WhatsApp at the business hotline number, or go to Facebook page where we have shared the registration link. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day ahead. Thank you so much. Stay safe, eat healthy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Franchise India. Thank you, participants. Thank you, Sarashi. Thank you, Archana ji, and have a good day. Thank you.
Thank you too. so much. Best of Thanks, luck. Darshan. Bye. Thanks.